like Anushashan, Pratishta, Parampara. We were like 99% sure that we are a part of plagiarism now. Student because of the week का मोटिव ही यही है it was कि really devastating for me. I was very heartbroken. And within a month, I got to know that due to COVID, the course has been suspended because I was that butterfly who just came out of her cocoon. And was started learning to fly. Exactly. Even if कुछ बुरी चीज हो रही है तो सोचो कि everything happens for a good reason. But I got that course, but then within a week they also told me that the course is suspended. Do I have to just do it because I want to stay here in Canada? Because I didn't want to do that. कि कोविड ने ना बहुत सारों की लाइफ में ऊपर नीचे कर दिया है, तुम्हारी लाइफ में तो सब कुछ ऊपर नीचे कर दिया. Everyone was looking at me like, what are you doing here? Teachers here are really very friendly. That if this happens again, you'll fail the course. पर यदि आप ये मिस्टेक्स करते हो तो फिर आप जिम्मेदार हो उसके. फिर ये है स्टूडेंट ऑफ द वीक. स्टूडेंट्स को जानते सब हैं, पर पहचानो मेरे यानी कि जयमिन के साथ शो આપણો ગુજરાતી के स्पेशल सेगमेंट स्टूडेंट ऑफ द वीक पर. जी हाँ, स्टूडेंट ऑफ द वीक में आप सबका स्वागत है और आज है हमारा एपिसोड नंबर 13. स्टूडेंट की लाइफ में चीजें हमेशा से ऊपर नीचे होती रहती है, पर आप जब नई कंट्री में आते हो, कभी भी कहीं से भी आते हो, कुछ सीखने के लिए आते हो. अभी आपका कोर्स नया होता है, नई कंट्री होती है, नए तौर तरीके होते हैं, पर उसके साथ साथ पढ़ाई करने के भी नए तरीके होते हैं. और इन तरीकों के बीच में शायद कभी कभी ये होता है कि हमारे नॉलेज ना होने की वजह से या फिर गलत नॉलेज होने की वजह से हम कभी कभी किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं. ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर आपका एक दिन बिगड़ सकता है, आपका एक महीना बेकार हो सकता है, ये शायद आपको एक सेमेस्टर से निकाल दिया जा सकता है, या फिर आपको एंटायर वीज़ा प्रोसेस यानी कि आपको इंडिया भी वापस भेजा जा सकता है. चीज़ें डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, चीज़ें आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे किस्से हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में करते हैं और उसके बाद उनके पास ना तो उनका कोर्स रहता है, ना तो वीज़ा रहता है, और फीस तो जा चुकी भाई साहब, फीस तो आपने पे कर दी थी, वो भी वापस नहीं आएगी. तो ऐसी कुछ मिस्टेक्स हैं जिनके बारे में आज बात करने वाले हैं और स्पेसिफिकली प्लेजरिज्म के बारे में बात करने वाले हैं. सो आप कहीं मत जाइएगा. यदि आपके पास इसके बारे में कोई भी सवाल है तो वी आर जस्ट वन कॉल और वन मैसेज अवे. और आज जो हमारे साथ बात करने वाले हैं उनके साथ ऐसा हुआ नहीं है, पर उनके बारे में काफ़ी नॉलेज है. तो कहीं मत जाइएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे और इस बातों के बीच में कुछ ऐसी किस्से भी जानेंगे जो हमारे आज के गेस्ट के साथ हुए होंगे. चलिए भाई, नेक्स्ट आवाज़ जो हमारे साथ होंगी वो होंगी हमारी आज की गेस्ट जीत पाठक की. हाय जीत, हाउ आर यू? I'm good. How are you all? आई एम गुड, थैंक यू सो मच. सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत दूर से आए हो और आपका वो ड्राइव कैसा रहा, और आप कहाँ से आए बात है? मैं ऑटवा से आई हूँ और मेरा ड्राइव बहुत ही ज़्यादा लंबा था, बट आई हैड अ कंपनी, तो सॉन्ग्स, बातें, ये सब में सफ़र अच्छा रहा. अच्छा, और स्पेशली जब इतना लंबा सफ़र करके आते हैं तो आपका एक तो आप कितने सीरियस है वो बताए, वो मुझे पता लगा. और एक और चीज़ कि आप जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं, आई वॉज वॉचिंग यू ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, you were completely enjoying the entire process, and which is more important in student life. What do you think? Yes, exactly. जो भी कर रहे हो एकदम दिल लगा के करो, खुश रह के करो. अगर खुश नहीं हो तो किसी चीज़ में कोई मज़ा नहीं है, right? Exactly. Even if कुछ बुरी चीज़ हो रही है तो सोचो कि everything happens for a good reason. वैसे करके चलोगे तो life will be good. That's right. That's बहुत शानी बातें कर दी है, पर जीत के साथ कुछ ये चीज़ें भी जाननी है कि आखिर उसकी स्टूडेंट लाइफ में क्या हुआ था. सो जीत, आप कब आए थे? व्हाट वाज दैट कोर्स दैट यू सेलेक्टेड फ्रॉम इंडिया, और वो सबसे पहला दिन, वो प्रोसेस वाला दिन कैसा था आपका? सो मैं जनवरी 2020 में आई थी, और मेरा कोर्स था फिश एंड वाइल्ड लाइफ टेक्नीशियन, जो मैंने फ्लेमिंग कॉलेज में लिया था, विच इज़ इन लिंसी. ओके. एंड वो सारा प्रोसेस जो इंडिया से स्टार्ट किया था, उधर पहले मैंने कॉलेज और ये सब कुछ एक शॉर्ट लिस्ट बनाई थी कि मुझे कौन से कोर्स में जाना है मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड के हिसाब से. आई वाज अ ज़ूलॉजी स्टूडेंट बैक इन इंडिया, और मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है वाइल्ड लाइफ में और वाइल्ड लाइफ के रिसर्च में. सो आई वांटेड टू टेक अ कोर्स विच कैन बी लाइक एन एसेट फॉर माई करियर इन द वाइल्ड लाइफ. सो आई चोज फिश एंड वाइल्ड लाइफ टेक्नीशियन, एंड देन आई केम हियर. And within a month, I got to know that due to COVID, the course has been suspended. Whoa. Yes, and that was really devastating for me. I was very heartbroken.
And then I contacted college that I came here for this. I want to do this. What's the option? So they told me that you have two options. Either you take another course or you can do the online course, but there will be no field work, no research work, and no group work or anything like that. But the main reason I came here was for the research that I wanted to do. So I was really disappointed with this, but I didn't want to give up because I was that butterfly who just came out of her cocoon and was started learning to fly. Exactly. Right? And I didn't want it to break her wings and like let her down on the ground again. So मैंने सोचा कि why not ask other colleges with the same course? Like, do they have also suspended the course? So I asked many colleges, I contacted them, and then I got a reply from Algonquin College for the environmental management course. Okay. I got that course, but then within a week, they also told me that the course is suspended because the physical activities cannot take place due to COVID. Wow. Because tab Ottawa mein COVID nahi tha. But then a case came and everything like literally shut down there. So this happened, and then I asked them like, sorry. Then I asked them that what is the course which is available right now according to my educational background. Okay. So they told me that you can take project management. Okay. I said project management, I have never ever been into project management field. Not even in the management field. I have no idea about this. Then I told them, please give me some time. I need to research. And then I was researching and I was trying to connect it with my wildlife career. Like, will it be like any way helpful to me? Or do I have to just do it because I want to stay here in Canada? Because I didn't want to do that. Because I came here to learn and not just to be here as it is, right? One more student. Exactly. Exactly. तो मैंने सर्च किया and I was searching कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैं कैसे अप्लाई कर सकती हूँ वाइल्ड लाइफ में. एंड देन व्हेन आई वाज सर्चिंग आई सॉ एन जॉब पोस्टिंग फ्रॉम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, which I follow regularly because I wanted to be the part of that community. Okay. And I saw that they're hiring for project managers. And then I was so shocked that why would they hire project managers? And then I searched for the job description and I read that for the conservation projects and for the conservation of wildlife and sometimes for building the national parks and everything, they hire project managers to do such big projects. Wow. So I was really very surprised. I was like, I am from the wildlife field. I'll be in project management field, but somehow I can be a project manager in my wildlife field. And you don't know how special this skill can be because you know the wildlife and plus you will have management skills. Exactly. So I asked my father, and my father is the person who always motivates me. So he told me that, look, if you are ready for this, take it because you will have 2 field options available and you'll learn more. There is no loss because when you gain knowledge, there is no loss in that. Exactly. Right? So I took up the project management course. So that is how I ended up into Algonquin College and in Ottawa, and I came from there today. It's fantastic. What a story. What a roller coaster. क्योंकि कोविड ने ना बहुत सारों की लाइफ में ऊपर नीचे कर दिया. तुम्हारी लाइफ में तो सब कुछ ऊपर नीचे कर दिया क्योंकि जो चीज सीखने आए थे वो मतलब completely shut off हो गया. आप विंग्स काटने वाली बात तो नहीं होगी. पर you mentioned that your father motivated you. It's a Father's Day today, you know. Yes, I wanted to wish him. Can I? Yeah, sure. Happy Father's Day, Papa. I love you so much. Yeah, and it is always special क्योंकि इतने दूर आने के बाद फैमिली का वैल्यू तो चलो हमें पता चलता ही है और उसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी बातें हमेशा याद आती रहती है. चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे. पर देन आप उधर आ चुके थे एंड देन कोर्स चेंज कर लिया. यू नो द प्लेस हैज बीन चेंज. व्हाट एल्स हैपेंड नेक्स्ट देन? So let me be very honest. And on my first day, जब सब introductions दे रहे थे अपने, so everyone was like, I am from human resource management. I am from IT background. I am from people's management and everything. And when I stood up and gave an introduction, I am from wildlife background. Everyone was looking at me like, what are you doing here? You are from wildlife background. I told them the same story that I told you guys and all were really happy and started clapping for me. So I was really happy with that. But then actual roller coaster started. What happened is, पहले ही दिन सारा मैथ्स का सब आने लगा. आई एम अ बायोलॉजी स्टूडेंट. हाउ वुड आई नो फाइनेंस, कैलकुलेशंस, एवरीथिंग? सो
I wasn't crying, but I was about to cry. And my professor noticed this. And she told me that, can you meet me after the class? I said, sure. So she asked me, what's the problem? I said, I am not at all familiar with whatever is going on right now, because my background is completely different. I don't know what to do, and I don't want to really give up, but I want to learn. But this thing is completely new. That's why I'm very, very nervous and I'm confused. So she said me that, do you know we have like lot of courses going on in college except from the lectures? I said, yes, I have heard about them. But then she gave me the complete list of courses which I can learn apart from the lectures. Wow. So I started going to those workshops where I started learning basic calculations which were useful in my courses. And that way I was able to achieve and finally like completed the course and everything. वेरी नाइस वेरी नाइस. सो इन सारी चीज़ों के बीच में कभी कभी ये भी हुआ होगा कि स्टूडेंट्स ने जो आपके क्लास में थे उन्होंने हेल्प किया होगा, या फिर टीचर्स ने स्पेशल क्लास बुलाई होगी. वैसे हमारे इंडिया में ना स्पेशल क्लास बुलाने का मतलब कुछ और होता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता इधर, क्योंकि काफ़ी लोग हेल्पफुल होते हैं. सो एनी सच एक्सपीरियंस कि जहाँ पे आपके आसपास के लोगों ने आपको हेल्प किया होगा, या फिर हाउ दे बिकम हेल्पफुल टू यू? Yes, so all the friends like I met in the class, they were my friends from the very first day, because they got to know that I came from a wildlife background, and so they were really like inspired from my background. And I don't know, they started asking me, what did you do? Like, do you used to go and track animals, all of that. So that was the conversation we started. उसके बाद suddenly like हम लोग सब साथ में बैठ के like during our lunch times, we used to discuss like what's the problem. I used to ask them, अभी ये कोर्स नया है, if I'll not speak, I'll not learn anything, right? Yeah. So I had to talk with them, and I told them, look, I don't know anything. I will have to learn some things from you. So please teach me. And even to the professors, I would be really, really like straightforward that I don't know, please teach me. Even if like everyone in the class knows everything, everyone's doing everything, no one has any doubts, I'll be the one to raise up my hand. I don't know, please teach me. And how do they react? Is it okay to ask every time? Yes, it is okay, because teachers here are really very friendly. All the professors here are ready to help you every time. So you need not to like be hesitate. बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. If you'll be hesitant, like you'll not learn. You are here to learn. Exactly. So I always used to ask doubts, and I still remember one of my professor who was my project coordinator and also my course coordinator. What did she do to motivate me? We have usually the case studies in our midterm exams. So she came up to me and told me that I have a surprise today in the midterm exam for you. I was like, what? And then I was sitting in the midterm exam hall, and the case study in front of me was a wildlife case study. So it was really very good, and it was a conservation case for the lions in Africa. Wow. So मैंने देखा कि मेरा ड्रीम तो ट्रू होने जा रहा है. मैं केस स्टडी पढ़ रही हूँ वाइल्ड की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मिड टर्म एग्जाम में, एंड दैट वाज द first thing that my professor did for me to make me comfortable, and she like showed me like देखो कि आपकी wildlife की study यहाँ पे भी आती है, and we apply management tools to that. Wow. So nothing goes into waste, right? Yeah. So that is how I started learning new things. Wow, and यही जर्नी के बीच में जीत ने काफ़ी कुछ सीखा, और उसके बारे में हम बात करेंगे. नाउ इट्स टाइम फॉर कमर्शियल ब्रेक, लेडीज एंड जेंटलमैन. आई विल बी राइट बैक, और जीत के साथ और बातें करेंगे. और भूलिएगा नहीं, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन बताया, प्लेजरिज्म वो आपके पर कभी भी आ सकता है, पर यदि आप सीधा सीधा काम करें तो नहीं आएगा, पर कैसे सिचुएशन में आएगा, और आएगा तो फिर व्हाट कैन हैपन. आई विल बी राइट बैक. Hello, good morning. Kim Cho Toronto. I'm Jeet, and you are listening me live on Red FM Toronto. I always wanted to do this. This was one of my like thing from my bucket list. And it is always, क्योंकि वो विद्या बालन ने जो मुन्ना भाई में जो प्रैक्टिस किया था, गुड मॉर्निंग मुंबई, Exactly. उसके बाद से ना काफ़ी लोगों का वो बकेट लिस्ट में ऐड हो गया था कि ये मेरे को भी करना है यार, ये मेरे को भी करना है. पर इट्स ऑलवेज फन, क्योंकि एक तो हम प्रदेश में, और उसके साथ साथ हमारी लैंग्वेज हमें बोलने का मौका मिल रहा है, और रेड एफएम तो है ही है. Exactly. चलिए, कम बैक टू योर टॉपिक कि जहाँ पर हम बात कर रहे थे. आपका कोर्स आगे बढ़ा, यू नो फ्रेंड्स वर देयर, यू वर लर्निंग फ्रॉम देम, एंड देन एक लाइफ का वो पड़ाव आया
जहाँ पे बहुत बड़ी सीख मिली? What was that? So the thing that happened to us, that we have to submit projects and assignments in every semester, right? Correct. So there was one assignment जिसमें हमको सारा data collect करके and then we had to like put the references in the end and we have to do APA citation for that because हमारी college में हमारे course में they were expecting us to do APA citations. Okay. So everything was going good. सारे assignments में किया था सब कुछ, but that one assignment, one of our group member forgot to do that और उसमें एक single link नहीं थी and because of that हमें plagiarism लगा था उस particular assignment में. Okay. And that took a really bad turn in our course. उसमें क्या हुआ कि like after getting plagiarism, our professor just directly put 0 marks. She didn't even in the assignment completely, and there was 25% assignment of the entire course. Okay. And that was really very important because if we fail that, we will fail the midterm exam. That was the case. So what happened is we got 0 from the professor, and then we contacted professor. Professor, what's wrong? Did you put 0 by mistake, or there's something wrong with our assignment? Then she told us that I want to set up a Zoom meeting with you all. So we were really very afraid that what's wrong, and we were like 99% sure that we are a part of plagiarism now because this can only happen. Yes, exactly. So then she came up on a Zoom call and उन्होंने हमको बोला कि आप लोगों ने जो एक सोर्स इसमें लिया हुआ है, जो एक पार्ट लिखा हुआ है अपने असाइनमेंट में, that is copied from some website. So we said, no ma'am, we haven't copied anything. We did it like on our own. So she said, but this shows on our software that this is copied from somewhere. And the worst part is, if you have copied, you should have like put the reference link or have cited it because it is not your work. It doesn't belong to you. Correct. It's someone else's work. So you should have put the reference link, and there's no reference link for this particular portion here. So that is why you get 0 in this assignment, and this is a big mistake. We don't accept this. So पहले तो इस सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था कि ये रेफरेंस लिंक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर एक छोटी सी लाइक 2 लाइन भी हमने कहीं से रेफर करके लिखी है तो वो किसी ऑथर को बिलोंग करती है. Correct, yeah. And he has his copyrights, right? We cannot just use it in our assignment and just show it as our own work. Yeah. So then she told us that you will be like getting 0, and then we requested. So she passed on the matter to our academic chair. Like उसमें क्या होता है कि सारे प्रोफेसर्स एकेडमिक चेयर जो ये प्लेजरिज्म ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल वो होते हैं, वो लोग देखते हैं कि आर वी लाइक सेइंग द ट्रूथ और नॉट, ये सब. सो उनके साथ हमारी मीटिंग हुई एंड देन अगेन द सेम थिंग. सारा हम लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे. जैसे अभी मैं बोल रही हूँ ना तो भी मुझे वो डर याद आ रहा है बिकॉज आई क्राइड अ लॉट बिकॉज वो चीज़ पहली बार हुई थी एंड आई जस्ट चेंज द कोर्स एंड ये वापस से 1 महीने में वापस ये मेरे साथ हो गया. एंड इट्स अ बिग हिट क्योंकि इट्स नॉट जस्ट यू, एंटायर क्लास को हुआ था, राइट? Exactly. How many people were there? How many students? So we were in a group of 5, पर वैसे दूसरे ग्रुप्स के साथ भी हुआ था. एंड लाइक मेरे ग्रुप में हम ही सारे इंडियन स्टूडेंट्स थे बिकॉज ऑब्वियसली यूल चूज लाइक अपने फ्रेंड्स जैसे हो जाए जिनके साथ आपकी बनती हो वैसे ग्रुप बनाओ. सो यस ऐसा सब हुआ एंड देन एकेडमिक चेयर ने भी बोला कि एक्सेप्ट इट जिसका भी ये पार्ट था बिकॉज यूजुअली असाइनमेंट्स में अगर हमारे 5 का ग्रुप है तो उसमें पार्ट्स भी डिवाइड होता है. तो अगर जिसका जो पार्ट होता है ना तो उसके ऊपर उसका नाम होता है कि सपोज आई हैव रिटन द इंट्रोडक्शन पार्ट तो उधर मेरा नाम होगा कि इंट्रोडक्शन पार्ट इज रिटन बाय जीत और समवन एल्स लाइक दैट. सो वो पर्टिकुलर पार्ट जिसका था उसको पूछा कि डिड यू डू दैट. सो like he or she had to accept it because like बाकी सारे entire group को ये problem में हो सकता था. But we didn't know the consequences, right? So this happened first time and that particular person got 0 and हमको हमारे marks वापस मिल गए थे, but we were on a warning that if this happens again you'll fail the course. Okay. और जो भी आपका दोस्त है या फिर दोस्त थी उसके साथ what were the next steps? What did they do? और स्पेशली इन चीज़ों के साथ साथ उसके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए?
So what happened is वो पर्टिकुलर पर्सन को फर्स्ट असाइनमेंट में तो 0 मिल गया एंड देन सेकेंड टाइम फिर से ये चीज़ हुई थी जब लाइक रेफरेंसेस तो थे पर प्रॉपरली साइटेड नहीं था बिकॉज यहाँ पे इनके लिए सिर्फ रेफरेंस लिंक डालना इज नॉट इम्पॉर्टेंट यू हैव टू साइट इट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट दे वांट करेक्ट राइट सो दैट पर्सन वाज फेल्ड फ्रॉम द कोर्स तो पूरी सारी फीस जो $10,000 थे वो सारे गए राइट सो और आपका जो सेमेस्टर आपका जो टाइम सब कुछ बिगड़ा एंड देन आपकी प्रोसेस लंबी हो गई बिकॉज यू हैव टू अप्लाई फॉर द न्यू कोर्स एंड देन यू हैव टू पे अनदर फीस एंड आपकी जो स्टडी परमिट होती है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड की होती है तो उसके एक्सटेंशन के रिक्वेस्ट के लिए लेटर डालना विच हमेशा एक्सेप्टेंस नहीं आती है एग्जैक्टली सो दिस आर द चैलेंजेस यू फेस if you are the part of plagiarism, so you have to be very very careful with the citations that you do and जो भी फॉर्मेट होता है वो आपके कोर्स में आपको पहले से बताया जाता है जैसे हमारे में हमको बताया था कि you have to use APA citations then you can not use any other citations rather than that is also a plagiarism then yes because if they need specific format they will only accept that and colleges are giving workshops for that so you have to go and learn like that's an extra thing and that will be like for your lifetime if you are learning the citations that's not like anything bad in that correct पर चलिए ये तो आपने बताया आपके साथ क्या हुआ था पर मुझे ये जानना है कि if anybody is listening us right now और उनको जानना है कि फिर ये अवॉइड कैसे किया जा सकता है any 3 specific advice on plagiarism कि जो स्टूडेंट्स को या तो ध्यान रखनी चाहिए या तो अवॉइड करनी चाहिए any 3 or 5 whatever number you have so first of all know that आपके कोर्स में कौन सा citation यूज होता है what particular citation they know and then वो citation को अच्छे से learn कर लो there are lot of tutorials on YouTube and like on LinkedIn and even the colleges like giving workshops for that you just have to go and sit for half an hour correct it doesn't take much of your time and that will save you money because obviously and those are free workshops right so know the citations and then second if you're referring to any website make sure if you're using any particular part from the website make sure you're copying and pasting it on the separate note document or the Word file and paste the link of that particular website right away so that you don't forget to mention it while submitting your report right that's right so that's the second thing and third thing is make sure you check everything before submitting your report because some colleges also show the software percentage of plagiarism like my college used to show the percentage when you submit it they will show like what all are like coming in red as a part of plagiarism so you get so we can always correct it yes you get the chance to correct it so even after doing that even after seeing that you are being like part of like plagiarism and everything you have written as being plagiarized you have to change it right why would you not then avoid why did you it? guys did not change it Because we didn't know that because at that time that professor was really very strict and as soon as we submitted and he or she might have seen the score they just like took up our file from that and we couldn't see it any longer because the notification goes to professor yes and even the fourth thing I would like to mention which is very very important do not copy assignments from your seniors do not even refer because every college has a database in which their assignments are kept so if I pass on my assignments to anyone else and if they copy it like college would be able to know that it is from any past student assignment and college might contact you for this reason and that can cause you trouble in future as well even if you have passed out from college so this is really bad do not do that so this is the advice I would like to give to the international students who are coming or who are here in Canada that plagiarism is a really very big thing take it seriously guys क्योंकि ये आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स में डाल सकता है और उसके साथ साथ आप इधर आए पढ़ाई करने के लिए और पढ़ाई के साथ साथ आप इधर ग्रो होने के लिए आए यदि एक भी स्टेप बैक हुआ तो वो लॉस आपका ही है तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा एंड उसके साथ साथ जीत की लाइफ फिर आगे बढ़ी और कोर्स पास हो गया फिर व्हाट हैपेंड नेक्स्ट जीत एंड व्हाट आर यू डूइंग नाउ
So after my course completion, I was applying for the jobs, and then the very important thing that I would like to tell all the students that you have to make sure that you add your professors on LinkedIn because they are really active on LinkedIn. Okay. And make sure you keep in touch with your Why? professors But why? because they are the best referrals you'll ever get for your job. Okay. Yes, because what happens is they are your professors and they have been working in really good companies. So if you are a good student and if you have performed well in your courses, Correct. then they do keep you in mind. Here people are so friendly. Even other people in your LinkedIn network and your professors, they will definitely refer you if they'll think that you are a good fit for a particular position. Because even they want you to grow, and even they want that their students grow in their life and make a good career. So it is very important to add your professors on your LinkedIn profile. Please do that. क्योंकि वे अपने फायदे के लिए कर लो, क्योंकि पता नहीं आगे जाके कौन अपना अच्छा रेफरेंस दे पाएगा. ओके, इट्स टाइम ऑलमोस्ट टू फिनिश आवर इंटरव्यू, पर उसके पहले ये टाइम तो बहुत फास्ट जाता है और इट्स 10:34 लेडीज एंड जेंटलमैन. पर ये लाइफ के बीच में नाउ जीत इज वर्किंग वेरी वेल. हाउ इज योर एक्सपीरियंस चेंजिंग द फील्ड and especially having the knowledge of two fields? I feel really very good. I have come across like lot of new things in the different field, and the best part is that अब मुझे ये field बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी है. If someone will ask me that, do you want to stay in this field? Yes, I want to grow more in this field because this field has not even made me like a good person, but made me punctual because time management, scheduling, and budget. Okay. Which is really very important for an international student life, just like Anushashan, Pratishta, Parampara. So this made me a really good person. I was a good person though, but a really very good person. I want to hear that once again, Anushka. Oh, Anushashan, Pratishta, Parampara. A very famous dialogue of Amitabh Bachchan from Gurukul. Yes. पर ये सब चीज़ों के बीच में ना एक चीज़ तो मुझे आज दिख रही है कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लाइफ. Exactly. तो आपको किसी भी चीज़ से, स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में जब आप आते हो, तो मैंने वैसे जैसे इंट्रोडक्शन में बताया कि नई कंट्री के साथ साथ नए तरीके भी सीखना है आपको, नए लोगों से भी मिलना है. पर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी चीज़ से डर जाओ या फिर स्टेप बैक हो जाओ. एवरीथिंग इज न्यू यार. हर चीज़ लाइफ में पहली बार ही होती है. Exactly. If I tell you, being an international student, मेरे लिए यहाँ पे सब कुछ नया था. Trust me when I say it, I have never been to kitchen when I was in India. Okay. मुझे मम्मा कभी भी किचन में आने नहीं देते थे. वो बोलते थे आप पढ़ाई करो बेटा, आपको इधर नहीं आना है, हम है ना यहाँ पे, तो आप पढ़ाई करो, आपको जो भी चाहिए मुझे बता दो. जब यहाँ पे आए फर्स्ट डे, I had to video call my mama. Mama, what do I do? कहाँ से शुरू करूँ? बिकॉज मैं यहाँ पे आने से पहले भी हॉस्टल में ही थी, तो ऐसा नहीं था कि मेरे पास टाइम था कि मैं मम्मा से सब चीज़ें सीख लूँ. और यहाँ पे आने के लिए सब एक्साइटेड होता है. जब फर्स्ट टाइम आता है तो इतना लाइक उनको ऐसा फील भी नहीं होता है कि हाँ मैं सब छोड़ के जा रहा हूँ, ये वो सब कर लेंगे मम्मा, सब हो जाएगा. मम्मा ने बहुत बोला था सीख के जाओ बेटा, बट नहीं, हम सब कर लेंगे. दैट एक्साइटमेंट इज ऑलवेज देयर. सो आई वीडियो कॉल्ड माई मम्मा एंड आई आस्क्ड हर, मम्मा लोट में पानी कितलू जाए? एंड शी वाज लाइक पहला लोट बताओ मैंने. सो आई वाज डूइंग दैट एंड देन मैं लोट तो बनाई दी दो, बट देन आई स्टार्टेड मेकिंग रोटीज एंड मम्मा वाज स्टिल ऑन द कॉल देयर. So I told her, Mama, roti. Mama, kaya deshno naksha banayo che beta? Oh my God, that was so hilarious. Like from that to like right now, if you see me, like everyone in my house right now loves my cooking. Wow. They call me master chef. They give me this like chef kiss. Okay. So journey from making those Big rotis, naksha. yes, exactly, to being a perfect cook is a journey. So you have to learn everything and you will learn eventually because यहाँ पे सब करते हैं. If you'll see like लोगों को अपने घर में ही, so आपको सब करना ही पड़ेगा because you don't have any choice. यहाँ पे कोई करने नहीं आएगा आपके लिए. Exactly. तो ये one of the achievements है स्टूडेंट की लाइफ का, और ऐसे बहुत सारे achievements है जो जीत ने किए, जो आपको बताए. Once again, जीत, thank you so much for being here और आपके experience हमारे साथ शेयर करने के लिए भी, और स्पेशली ऑटवा से ड्राइव करने के लिए. Oh, that was my pleasure. I always wanted to come here and thank you for inviting me. Thank you so much. Thank you so much. So ladies and gentlemen, लाइफ में कभी कभी ऊपर नीचे भी होता है,
और कभी कभी ये चीज़ें भी होती है जो आपको नहीं चाहिए थी। पर मैं चाहता हूँ कि ये जो एक्सपीरियंस है, प्लेजरिज्म है या फिर रोटी बनाने का एक्सपीरियंस है या फिर जो भी चीज़ है, स्टूडेंट ऑफ द वीक का मोटिव ही यही है कि आप इन सारी चीज़ों से एटलीस्ट अवेयर रहें, आपके आजू बाजू जो भी हो रहा है आपको पता हो। और यही चीज़ आज भी हमें सीखने मिली। मैं नहीं चाहता कि आपको अपने कोर्स से या फिर आपको अपने सेमेस्टर से या फिर किसी असाइनमेंट्स में से निकाला जाए या फिर 0 मार्क्स दिया जाए। पर यदि आप ये मिस्टेक्स करते हो तो फिर ये आप जिम्मेदार है उसके, फिर आपको ये मिलेगा। पर ज़्यादातर लोगों, जहाँ तक मैंने ऑनलाइन पढ़ा, ज़्यादातर लोगों को ये मिस्टेक्स इसलिए होती है क्योंकि उनको नहीं पता होता है। और one of the other reasons which internet is talking about, we all are behind money, we all want to earn some more money and during the student life, और जहाँ पर आपको फिर जो पढ़ाई करने के लिए है उसके लिए टाइम नहीं मिलता। What shortcut you will get then? Definitely you will get something, और इसी का ये रिजल्ट होगा फिर। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में सीधे तरीके से आएगी और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको कुछ सिखा के जाएगी। Nothing is free in this world, पर वैसे चीज़ों में मत इन्वॉल्व होना जहाँ पर आपके लिए, स्टूडेंट लाइफ के लिए या फिर आपके पूरे करियर के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ये बस यही आशा है हमारा। और ऐसे ही कोई स्टूडेंट्स है आपके पास, यदि कोई सजेशन है तो डोंट फॉरगेट टू मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल मीडिया, एंकर जयमिन, ANCHORJAYMIN। ये एपिसोड मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएगा कुछ दिनों के अंदर। और यदि आपने कुछ भी मिस किया है तो भूलिएगा नहीं, दैट इज द चैनल यू नीड टू गो। वंस अगेन जीत, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। Thank you so much. थैंक यू। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आई विल बी राइट बैक। 10:39 आप सामने रहा છો આપણો ગુજરાતી શો।